morning students. So now continue with the chapter number 7 part number 5 Evans tries an O level. आज हम इसका पेज नंबर 75 का लास्ट पैराग्राफ देखेंगे. इवांस फेसिंग द डोर. इवांस दरवाजे को फेस करते हुए sat quietly at the farther of the two tables. कुछ ही दूरी पर चुपचाप से टेबल पर बैठ गया. His whole attention riveted to a textbook. उसकी जो पूरी निगाह थी, उसका जो पूरा ध्यान था वो एक टेक्स्ट बुक पर था, ऑफ एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर, जो कि एक एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर की बुक थी. उस पर उसका पूरा ध्यान था. स्टीफन्स टुक द की फ्रॉम इट्स रिंग. स्टीफन्स ने अपनी की ली इसके रिंग से. एंड देन सेल लॉक स्प्रैंग बैक. उसके बाद वापस से उसने सेल लॉक को खोला. एंड विद ए थर्डेड, एक धड़ाम की आवाज के साथ और एक घंटे जैसी आवाज वहां उसने सुनाई दी. इट वॉज 9 AM. ये सुबह का 9:10 का समय था. When the governor switched on the receiver. जब गवर्नर ने रिसीवर को स्विच किया. He had instructed Jackson. उसने जैक्सन को निर्देशित किया to tell Evans of the temporary little precautions. कि इवांस को टेम्पररी कौन कौन सी सावधानी बरतनी है. That was only fair. जो केवल आसान था. As if Evans would spot it. जैसे कि इवांस उन पर पूरी तरह से ध्यान देगा. बट इट वॉजंट इट ऑल ए बिट थ्रेट्रिकल. लेकिन यह इतना ज्यादा थ्रेट्रिकल नहीं था. स्कूल बॉयज ऑलमोस्ट. ये स्कूल जाने वाले लड़कों के जैसा लगभग था. हाउ ऑन अर्थ वॉज इवांस गोइंग टू ट्राई टू एनीथिंग ऑन टुडे. आज पृथ्वी पर क्या होने जा रहा था. इवांस क्या करने जा रहा था. इफ ही वॉज सो एनेक्सियस. अगर वह इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक था. टू मेक अनदर ब्रेक. दूसरी बार जेल को तोड़ने के लिए. वाई इन हेवंस नेम हैडंट ही ट्राइड इट. तो उसने पहले से कोशिश क्यों नहीं की. फ्रॉम द रिक्रिएशनल ब्लॉक. मच इजियर, जहां पर बहुत आसान था. बट ही हैडंट, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था. एंड देयर ही वॉज नाउ. अब वह वहां था. सिटिंग इन ए लॉक्ड सेल. एक ताला बंद जेल में बंद होकर. एंड द यार्ड. एंड ए यार्ड विद ए वॉल. एक बड़ी सा आंगन जिसमें एक बड़ी ऊंची दीवार थी. एज हाई एज ए हेयर स्टेक. इतना ऊंचा जैसे कि भूसे का या सूखी हुई घास का लगा हुआ ढेर हो. यस, इवांस वॉज एज सेफ एज हाउसेस. इवांस भी बिल्कुल घरों की तरह पूरी तरह से सुरक्षित था. नाउ सी द पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश. नाउ इवांस वॉज सिटिंग क्वाइटली फेसिंग द डोर. इवांस बिल्कुल चुपचाप से बैठा था डोर की ओर फेस करके. स्लाइटली अवे फ्रॉम द टू टेबल्स. ही वॉज concentrating on the elementary German grammar. Stephens took one of the keys from the ring and opened the lock. The lock of the cell made a ringing sound after it sprung up. At 9:10 AM, the governor switched on the receiver of the microphone. He ordered Jackson to tell Evans to be careful, as they had installed a microphone in his cell. He thought that it would be good for forewarn him. He said it in a way as though Evans would never be able to spot it. A thought came to governor's mind that all this seemed like a theatrical drama, and all their preparations were like those done by the schoolboys. He thought that how could Evans think of escaping that day? He could have tried it when he was at the recreational block, because it was easier to escape from there, but today he was locked in his cell. All the officers were closely watching him. There were two doors between his cell and the yard. There were walls as high as a pile of dry grass. Yes, Evans was totally safe now. Now see the next paragraph of this chapter. Anyway, it wouldn't be any trouble at all to have the receiver turned on for the next couple of hours or so. It wasn't as if there was going to be anything to listen to. Anyway, ठीक है, कोई बात नहीं. It wouldn't be any trouble. कोई भी परेशानी नहीं होगी at all to have the receiver turned on. अगर रिसीवर खुला रह जाए for the next couple of hours, अगले कुछ घंटों के लिए. It wasn't as if there was going to be anything to listen to. ऐसा कुछ भी नहीं था जो सुनना जा सकता था. Was it? क्या ऐसा था? Amongst those things, an invigilator's duty was to ensure. उसी समय एक इन्विजिलेटर की जो ड्यूटी थी वो सुनिश्चित की गई. That the strictest silence was observed. और बहुत गहन जो शांति थी वहां पर छाई हुई थी, ऐसा देखा गया. But
But still that little nagging doubt, थोड़ा बहुत संदेह था, might Evans try to take advantage of McLeary, get him to smuggle in a chisel or two or a rope ladder, or the governor sat up sharply. Governor चुपचाप से बैठ गया. It was all very well getting rid of any potential weapon that Evans could have used, but what about McLeary? What if, quite unwittingly, the innocent McLeary had brought in something himself, a jackknife perhaps, and that what if Evans had him hostage with such a weapon? So now see this paragraph. The governor thought that there will be no problem. Governor ने सोचा कि वहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं होगी. If he keeps the receiver switched on, अगर वह receiver को switch on रखता है तो. Although he knew, हालांकि वो जानता था that there was nothing to listen, कि वहाँ सुनने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था, because it is duty of the supervisor to maintain silence. क्योंकि एग्जाम में जिस सुपरवाइजर की ड्यूटी होती थी शांति को बनाए रखना उसका काम था. But he was still in doubt. लेकिन अभी भी उसे एक संदेह था. He was worried about Evans taking undue advantage of McLeary. He could have smuggled him to take long-bladed hand tool. वह उसे परेशानी हो सकती थी वहाँ उसे एक लंबा bladed hand tool ले जाने में या एक rope ladder ले जाने में. The governor at once got alert. गवर्नर तुरंत सचेत हो गया. He thought that they had taken away all the possible weapons. उसने सोचा कि वो सभी संभावित हथियार अपने साथ ले जा चुका था from Evans. But there were chances, लेकिन ऐसे अवसर था that McLeary could have brought some weapon unknowingly with him. बिना जाने मुझे अपने साथ वो ले जा सकते थे. But there were chances that McLeary could have brought some weapon unknowingly with him, such as a jackknife, एक बड़ा सा चाकू, which is with a folding blade. Even Evans could told him, यहाँ तक Evans को उसे बता सकता था, captive for forcing the prison officer to release him. Now see next paragraph. The governor reached for the phone. गवर्नर फोन उठाने के लिए पहुंचा. It was 9:12 a.m. सुबह के 9:12 हो चुके थे. The examinee and the invigilator had already been introduced by Stephens. Examinee और invigilator को पहले से ही Stephens ने introduce करवा दिया था. When Jackson came back, जैसे ही जैक्सन वापस लौट कर आया, and shouted to McLeary, McLeary से जोर से चिल्लाया, through the cell door, जेल के दरवाजे में से. Can you come outside a minute, sir? क्या आप एक मिनट के लिए बाहर आ सकते हैं सर? You too, Stephens. आप भी Stephens. Jackson quietly explained the governor's worries. क्या आपने भी गवर्नर की चिंता को एक्सप्लेन किया? And McLeary patiently held out his arms. McLeary ने भी अपने कंधों को बाहर निकाला. Whilst Jackson lightly frisked his clothes. Something hard here, sir. यहाँ कुछ ना कुछ कठिन काम है. माँ reading glasses वह उसे पढ़ रहा था. Replied McLeary. McLeary ने जवाब दिया. Looking down at the spectacles case. Spectacle case की ओर देखते हुए. Jackson quickly reassured him. Jackson ने उसे तुरंत आश्वस्त किया. And bending down to the landing thumb flickered the catches on the suitcase. He picked up each envelope in turn. उसने प्रत्येक लिफाफे को उठाया. Carefully passed his palms along their surfaces. And seemed satisfied. और वह पूरी तरह से संतुष्ट प्रतीत हुआ. He rifled curiously through a few pages of Holy Writ. उसने जल्दी कुछ पन्ने पलटे इस पवित्र रिट के. And vaguely shook the Church Times. और शीघ्रता से चर्च टाइम्स जो मैगजीन थी उसे भी उसने हिलाया. All right so far, but one of the object in McLeary's suitcase was puzzling him sorely. लेकिन एक ऐसा ऑब्जेक्ट था जो McLeary को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था. Now see this paragraph in English. The governor called up someone at 9:12 a.m. Stephens had already introduced the supervisor and Evans, who had to appear for the exam. Just at the moment, Jackson came and asked McLeary to come outside for a minute. He explained about the governor's reason for being buried. McLeary cooperated him in the checking process by holding out of his arms so that he could be checked. Jackson started checking him very fast. He then found something hard, which McLeary said was his reading glasses. To be more sure, he even checked his suitcase. He checked each envelope and carefully searched everything with his palms. He also went roughly through the Holy Writ and the Church Times. Everything was fine, but there was one thing in the suitcase that was strongly confusing him. So this is the today's part of this chapter.
If you have any problem in this part, then you can contact to me on my personal number. Till then, thank you very much.